follow what sauce for the goose No, is sauce for the gander. Mr. Rodhi, sorry, no oral mentioning in my court. No, I'm not, I'm in the matter I'm saying. I am saying. We have no such application on board. Let it be circulated. We'll deal with it in the normal course. But Lord, I am respectfully submitting. If Sorry, Lordship make appearing an order for big today, clients, we will not tolerate this. You have to follow the rules in my but court. Lord, if your Lordship make an order today, my application will be infructuous. I am saying kindly defer the issue of grant of alphanumeric. Mr. Rodhi, you are aware about this proceeding going on. You could have intervened at that stage. What is this after the judgment is passed? You want to intervene now? No, Lord, the order is of 15th March. Ask No, but Lord, you are aware about the proceedings pending before this but court. Lord, we were not parties Arguments are anywhere. together. We were not parties at any time. Everybody, the whole world knew that this matter was being heard. Lord, I have Come no. back 1 second, Mr. Rodhi. You come here after the judgment is delivered. You are now, you file an application. That's not the way. Lord, I have come only in regard to Circulate 15th March. Kindly appreciate. No, Mr. I have no problem in Rodhi, declaration hear you. of the list of donors Rodhi. or the list of recipients. Mr. Rodhi will not hear you right now. We have a specific application which is on board. You ask your advocate on record to follow the procedure. File an email. It will be dealt with by my registrar listing. We'll take a, we'll get But no. I am saying No, kindly, Lord, If I do it for Mr. Rohatgi, senior No, no, counsel, then Mr. Rohatgi, you look at me. As Chief Justice, I have no face to tell all the other juniors to whom I declined list mentioning in the morning. What sauce for the goose is sauce for the I am gander. not mentioning, I am not appearing in the matter and making a submission. We have no such application on board before us. Lord, I have got it with me. I've made myself. My lord, the entire, I have emailed entire judgment One has. second, you wait. One at a time. Sorry, Mr. Rodhi. Yes. No, my lord, my submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute justificator. This judgment doesn't constitute justificator. Mr. 1 second. Yes. 1 second. This 1 judgment is second. void. Please listen to me. You're It is- not, 1 second. I am a citizen of this 1 country. second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rodgi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, There's no question you've got. My friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No my lord, further. we will go by what your lordship. All, please. Whatever your lordship says, we will go by that. Do you want another contempt notice? No, my lord, your lordship will go by You have whatever had your enough lordship submitted says. Bombay. Only I have said what I wanted to say. That this judgment is rendered behind the back of the people of this country. It doesn't bind us. It doesn't constitute us. It is not a representative. Do not, at all. please, once we have said no, please move the I application agree by email. what your lordship says. Do not continue and persist. Yes, I only said it was not a representative proceeding. You, if you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No my lord, further. we will go by what your lordship. All, please. Whatever your lordship says, we will go by that. Do you want another contempt notice? No, my lord, your lordship will go by You have whatever had your enough lordship submitted says. Bombay. Only I have said what I wanted to say. That this judgment is rendered behind the back of the people of this country. It doesn't bind us. It doesn't constitute us. It is not a representative. Do not, at all. please, once we have said no, please move the I application agree by email. what your lordship says. Do not continue and persist. Yes, I only said it was not a representative proceeding. You are All the way come from Kerala. You are obstructing in the administration of justice. Pardon, my lord? You are obstructing in the process of administration of justice. The entire judgment is against behind the back of these people. Parliament has been rendered Hey, irrelevant. that's all. That's all. We heard that. Please, that's all. You made it. We are in a democracy. We will not hear you till you follow the procedure prescribed. No, no, we are filing it. Please do. We are filing it. Please do. We'll consider it afterwards. That's That's at it. 10 o'clock. I- My friend came from Kerala to took a 1 o'clock flight. Have not- Be kind to us. last- Be kind to That's us. all, please. We will not hear that. In democracy. Please call for the application. Please follow the application. Democracy. My lord, may I mention, my lord, my petition for suo moto that is pending. Whatever lordship want to do, that do only. I will not disturb lordship. Mr. Agarwala, apart from being a senior counsel, you're the president of the SCBA. Yeah. You should know the procedure. You have written a letter to me asking me to invoke my suo moto jurisdiction. Yes, yes, my lord. No locus to mention So anything. that I should not You disturb have to lordship. restrict with what you We have should not waste it honorable time, court's time. Fair That's enough. why. Lord, Only that. These are all publicity-oriented stunts. We will not permit it. Not a handmaid of Sir, Whatever please. lordship will feel better.
Mr. Agarwala, please keep it at that. I may have to say something more, which will be perhaps a little distasteful. My lord, Please, there are please close it. members of the bar who are Mr. senior to your lordship. Majumdar, it is enough now. Also senior to your It lordship. is enough. Justify your old man, Lord. Be kind to us, later. We are very polite and begging with your lordship. Your lordship has use a soft language. Majumdar, we have been telling you that you are interfering, you are obstructing us. No. That is Look at done. this. Now, if you don't stop, we will have to. When we are not heard and we feel threatened. Sorry, Lord. Follow the line. Yes, Pala. Yes, hearing now. We issued notice on the last occasion to State Bank of India. Mr. Kapoor, you are appearing? You are appearing But I appear. Mr. Salve is also there. for the State Bank? That's right. Yes. But I appear for the State Bank. Yes. Mr. Salve, in Yes. our order which we, in the judgment which we delivered, we had expressly asked State Bank of India to disclose all details. The language of the judgment was all details have to be disclosed. Therefore, that includes the bond numbers as well. So, But I, let SBI not be selective in the disclosure of details. We intend But I- to clarify that it shall disclose all details, including the bond numbers, and every part of the information which is in its possession and custody. Don't wait for an order of the court. We banked on the fact that the State Bank of India would be candid and fair to the court. But I just, whatever your lordship say, if your lordship say bond numbers, we can disclose the bond number. There is no problem. Tell us Somebody one- can why- screen them. And Why has the SBI not disclosed? I wanted to, my lord, tell my lord how we understood your lordship's judgment. Give me 5 minutes only to explain our conduct. We'll, of course, if your lordship say give anything more, everything will be given. But there's no question. SBI's attitude appears to be, you tell us to disclose a particular detail and we'll disclose it. That's not fair process. My lord, how we understood. The May SBI I- requires, this is the judgment of the Supreme Court. As chairman of the State Bank of India, I'm duty bound to comply with the judgment. I will disclose every part of the information which is in my custody as directed by the Supreme Court. Because when we said all details of the purchases, that means every conceivable detail which is available with State Bank of India. And we clarified by saying including. That should be, I mean, State Bank of India has the best legal advice open to it. May I, my lord, take your lordships to the 3 orders, so how we understood them. My lord, your lordship's first order was 12th April 2019. Sure. And we have, for convenience, my lord, we have put the 3 orders together. If your lordship just see that. We'll give everything, there's no question. Just to explain that it's not that the impression which is being created, my lord, is that State Bank of India has been playing ducks and drakes with the court. I just wanted to clear that up. If your lordship sees the 12th April 2019 order in paragraph 16, but I had asked my friend to make a little compilation of the orders so we could show them easily. Your lordship has not Yes, para 17, right? para 16, my lord. 16, you got this? Yes. Yes. This is the interim order my lords had been pleased Yes. to make. After, my lord, noting all the changes, the court would have to ensure that any interim arrangement that may be made would not tilt the balance in favor of either of the parties, but the same ensures adequate safeguards against the competing claims of the parties which are yet to be adjudicated. In the above perspective, according to us, the just and proper interim direction would be to require. All right. Can we just see para 15 again, Ron? Yes. The court therefore has to ensure that any interim arrangement that may be made would not tilt the balance in favor of either of the parties, but the same would ensure adequate safeguards against the competing claims of the parties which are yet to be adjudicated. In the above perspective, according to us, the just and proper interim direction would be to require all political parties who have received donation through the electoral bonds to submit to the Election Commission of India and seal cover detailed particulars of the donors against each bond. The amount of each such bond
and the full particulars of the credit received against each such bond, namely the particulars of the bank account to which the amount had been credited and the date of each such credit. So, my lord, your lordships felt this would what would ensure transparency, that you give all this, but you keep it in a sealed cover. So, my lord, a political party doesn't need bond number. If a political party comes and says, I have received so much from so and so, that gives the requisite Salve, we details. take it you're not arguing a case for a political party, right? No. On the contrary, Hearing for the state. I'm saying the reverse. I'm so sorry. I'm saying the reverse. But if a political Para 16, Mr. Salve, was relating to the political parties who had to submit the data to the correct, to the Election Commission. correct, and they have, and this has no, that's a separate issue. They whatever they have declared or not declared, that's a separate issue. But as far as the judgment of this court is concerned, because you Yes. were also supposed to. I'm coming in a minute. If your lordship will just give me 1 minute, how we understood it. Para 16, with as my lord has therefore noticed, only required the political parties to give all these details. And these details have been given, my lord. If they have not been given, that's between the ECI and the political parties. As my lord, the Chief Justice said, I'm not preparing for a political party. Then, my lord, para 17 was the mechanism. Your lordship said details will be furnished in respect of electoral bonds, the details of such bonds that may be received by a political party. Up to a date for issuing such bonds as per the ministry, that is February 19, will be submitted on or before 3rd of May 19. The sealed covers will remain in the custody of the ECI. So, my lord, we had no role to play. Your lordships had put this mechanism in place. In your lordship's judgment, your lordships dealt with the diverse aspects, including the need to preserve some degree of anonymity, and your lordships will not mark that in para 125, where your lordships discuss the electoral trust as a alternative to this system. And in the conclusions, which are at para 218, if your lordships have the compilation, it would be PDF page 76. Yes. Your lordships will not say we direct the disclosure of information on contribution received by political parties under the electoral bond scheme to give logical and complete effect to the ruling. On 12th April, the court issued an interim direction order directing that the information of donation received from donation must be submitted by political parties. The court directed political parties to submit detailed particulars of donors against each bond, the amount of each bond, and the full particulars of the credit received against each bond, namely the particulars of the bank account to which the amount has been credited and the date on which such credit has been made. I'm only not saying this to explain how we understood the order. So this correlation between which political party has received money from whom comes in here, because the political party says, I have received so much money from so-and-so. Then it says, during the course of hearing, Mr. Sharma said that the ECI has only collected information on the contribution made in 2019 because of para 14 indicates direction was limited to contributions in that year. Your lordship then clarified para 13 and 14 of the interim order are extracted below. In the above perspective, according to us, the just and proper interim direction would be to require all political parties who have received donations through electoral bonds to submit to the Election Commission and sealed cover particulars of the donors against each bond, the amount of each such bond, and the full particulars of the credit received against each bond, namely the particulars of the bank account to which the amount has been credited and the date of each such credit. The details will be furnished forthwith in respect of electoral bonds received by a political party till date. The details of such other bonds as may be received up to the date fixed for issuing such bonds, including February 19, May 19, will be submitted on or before May 19, and the sealed covers will remain, etc. Then your lordships clarify, para 14 does not limit the operation of 13. 13 contains a direction in unequivocal terms to political parties to submit particulars of contributions received through electoral bonds to the ECI. Para 14 only prescribes the timeline for the submission on the contributions when the electoral bond should be done. In view of the interim order, the ECI must have collected particulars of contributions made to political parties through electoral bonds.
In view of our discussion, the following directions are issued. The issuing bank shall stop issuance of bonds, which was done immediately. The SBI shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order by the court till date to the ECI, fully given, my lord. Details shall include the date of purchase of each bond, the name of the purchaser, and the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchase. All these details are given. SBI shall submit details of the political parties which have received contribution through bond since the interim order till the date of the ECI. SBI must disclose each electoral bond encashed by the political parties, which shall include the date of encashment and the denomination of the bond. Now, my lord, as we therefore understood this, the political parties have come and said, we have received so much from so and so. The details which we will give will make the database complete so that we have who purchased, when he purchased, and when they have got. If the numbers are to be given, we'll give them. There is no problem. So, according to us, the data. Mr. Salve, I have a few questions. First, tell us in what format is the data on the purchase and redemption of electoral bonds stored by the SBI? So, my lord, as I had explained in the application which we filed, because at that time we were functioning under the edict of anonymity, which had not been stayed. So, at that time, we were directed to preserve anonymity, including we had to take measures that within the bank. What is the format in which you maintain the data on purchase and redemption of electoral bonds? In what format do you store it? In 2 silos. Your lordship noticed that in the next order. So the data is maintained in 2 silos. You store it in 3 silos. From your application, it emerges now that you do it in 3 silos. The first silo is the bond number. The bond number is only on the bond. Purchase, and the third is the redemption. My lord, bond number is only on the bond, and it cannot be read except through under a UV light. That was only done, my lord, like authentication, because it was a bearer bond. That's what was sought to be. What's the purpose of the alpha? And second question, what is the purpose of the alphanumeric? The alphanumeric is the bond number which is visible only under a UV light. Is it only a security feature, or is it a security feature entirely? In the audit trail, do you also? No, my audit trail is separate. That's why we do the entire KYC. In the KYC, we have a bond unique number. It's not the bond number. You have a marker number of a client. Third question: How does the redeeming branch? Yes. How does the redeeming branch? Yes. Match the electoral bond number to determine that it is not a forged bond? So they were not, that's what I'm saying. When they received it, the person encashing it gets it, he sees that it's a valid bond because you see the security feature. You don't keep a record of it. The physical inspection. While redeeming it, the only way you can ensure that it is not a forged bond is to match the alphanumeric. Without There's nothing to match. It's like seeing a currency note. It's like seeing a currency note. You know that's the alphanumeric. Yeah. But cashed in the last 15 days because it's only valid for 15 days. So therefore, they will have to also match when was this bond. I think Mr. Bhushan should hold his peace for a minute. What is the information that you see when you scan the alphanumeric? Malad, you see a number. The details of the purchaser and the bank which issued the bond when you scan the bond? No. That's what I'm saying. That correlation was not kept for the reason it's like this. Mr. A or Mr. B come and buy the bond. So they go to branch A. They do the entire KYC information is done, their bank account details, etc., everything is done. That is silo 1, if one may so call it, which is nothing near Orchard's. That's been fully disclosed. That bond finds its way into the hands of some political party. We don't know who gives it, how it goes, how many hands it changes. It finds its way in the. We next get to see the bond when somebody comes and says. Mr. Salve, assuming that you construed our order based on the interim order merged with the final judgment of our court. Malad, even in the final judgment. Say that we will interpret our final directions in the light of the interim order, which has merged with the final judgment. Malad, your lordships. All details. That's why we came to my lord. Mr. Salve, we'll clarify to put it beyond any. No problem. No problem at all. We will say that now SBI will not only disclose the bond numbers, but it shall also file an affidavit again before our court saying that you have not suppressed you will not withhold any details in regard to this within the purview of clause B and C of para 221. Correct. I don't think there's anything else which remains. Details, you have to disclose all details. Let there be no
Because the burden should not lie upon the court or the petitioners to say, but this one has not been disclosed, but now this has not been disclosed. Now we'll disclose it, Malad, whatever. We must have finality to it. Yes, we'll do it, Malad. There's no problem. Just that this constant, Malad, the media constant beating down and the petitioners giving public interviews saying, we will take the state bank to task and we will show this and we will haul them up for contempt, etc., etc. But we are also public institutions working in this space. And it's all right. People work, people acted on the face of this. Your lordships granted an interim order saying keep records. It wasn't at that time, Malad, subject to correction. I didn't find any order which says all further actions will be subject to the judgment or something. There was no such direction. Your lordships are at that balancing interim order. Now, whether completely you should lift the privacy or remove anonymity, better your lordships will. Mr. Salve, the idea behind the interim order was in case the writ petition is allowed, then yes, data should come out. And that's what exactly is required. Nothing more. I must say so, Malad, as out of whatever Malad, the Chief Justice is saying, your lordship will clarify. We will give every bit of information, relevant, not relevant. We'll give every bit of information which we have. So that, Malad, there should be no feeling that SBI is interested in somehow holding something back. I only want, Malad, to share one thing. Malad, your lordship's judgment is one of the leading judgments on the subject on transparency, voters' rights, and balancing democracy, balancing the competing virtues of and trying to minimize the role of money while recognizing the role of money in elections, etc. It goes over a lot of subjects. The one thing that lordship's judgment was not meant for, possibly, and not designed for, is to give birth once again to a now dormant PIL industry, which will go after each industrialist and say, investigate this, investigate this, investigate this, investigate that. And the idea is the voter should know, which is absolutely, and may not say give the bond number, we'll give the bond numbers. The voter knowing is one thing, but this as fodder for the next 10 years to have PILs saying investigate so-and-so, investigate so-and-so. That is, I don't think, the purpose of your lordship's judgment. That was not what it was meant for. And your lordship will see whatever safeguards need to be put in place. Just one more Lord, thing. I have 2 minutes, my lord, if your lordship permits. At the outset, my lord, on behalf of the central government, I completely disassociate myself with what Dr. Agarwala has written. It is completely unwarranted and ill-advised. I want that to be made very clear, my lord, on behalf of the central government. Now, my lord, I have something to share, and I have been watching this very painfully, my lord, outside the court. My lord, your lordships sit in kind of a silos. Your lordships are, my lord, in an ivory tower, not, my lord, in a negative sense of the term. But what we know here, my lord, your lordships never come to know. The way in which your lordship's judgment is playing out, my lord, something your lordships must, my lord, be informed as highest court of the country. But what has happened? My lord, our case was that we want to curb the black money. A criminal may have paid the donation, but ultimately the donation comes in the white economy and we could not persuade your lordships. Lord, your lordships passed a judgment. Lord, every one of us understood the judgment and the directions in a particular way, that what your lordship wants is not, my lord, kind of a witch hunting. Earlier, my lord, our case was that witch hunting would be by the political parties. If A party is given, B party in some other state might victimize the donor. Now, my lord, the witch hunting has started, my lord, at some other level, my lord, not at the governmental level. The application comes of the SBI before your lordships on 11th of this month, my lord, and your lordships also, my lord. That's how, my lord, we understood, clarified the position. But most serious things, my lord, start happening thereafter. Lord, those before the court started giving press interviews, deliberately embarrassing the courts, my lord, and there is, Lord, a non-level playing field. My lord, on this side, nobody can rebut that. Neither government can do, nor state bank can do, nobody else can do. Thereafter, my lord, a series, a barrage of social media posts, my lord, at least intended to cause embarrassment, started during these 2 days. And thereafter, my lord, now it's anybody's field. It's an open field. Lord, statistics, your lordships are aware, can be twisted in any manner the person wants.
It's a matter of, my lord, intelligence of the reader to understand. Now, my lord, based upon the twisted and other statistics, my lord, any kind of, my lord, posts are being made. I know, my lord, your lordships cannot control that. The question is, would your lordships, my lord, consider issuing a direction which has a necessary and inevitable fallout, which the court would not be able to control? Lord, that saying Mr. Rohgi gave this money to this, then they have their own conclusion. Mr. Solicitor, we are only concerned about enforcing the directions which we issued in clauses B and C of para 221. That's As judges, we decide according to the Constitution. correct, my lord. We are governed by the rule of law. We are also the subject matter of comment in the social media and the press. But surely, as an institution, our shoulders are broad enough. No, I'm saying, I'm We not, are- my lord, we are- for a Our second saying. court has an institutional role to play in a polity which is governed by the Constitution and the rule of law. That's the only job. My lord, my purpose is to inform your lordships that there is something else playing out which neither your lordships intended nor the scheme intended. And, my lord, kindly bear that fact in mind. On 11th of March, my lord, we thought that we are ad idem, that this information would help the voter to take a call whether to vote in favor of a particular party or not. My lord, thereafter, this started in a very systemic. All right. What order? We just, can I assist you? No, Mr. Rodgi, we don't need assistance right now at the conclusion of the matter. One fact. I am the person who's going to. My lord, they have no stakes in the matter. Forget my application. No, Mr. Rodgi, we'll not hear you when your application, we have to follow procedure in the court. It's a constitutional court. One will allow us. Mr. Rodgi, Say no, something. Mr. Rodgi. I told you the reason for it. We are now at a stage when the I judgment am is not on my issued. application, not that it has become influential. Sir. I am now only saying No, that. Mr. Rodgi, we don't need any assistance at all. We are clear. We had very able assistance on both sides. We don't need any third party I assistance. meant not. Your lordship didn't get a One proper second, please. assistance. So just one The thing. grievance of those who will now be deemed that you have given to A party, you have given to B party, that will That be. was precisely asked, that was. Lord, one more clarification. What will be the consequence that we gave to the government under a scheme? Mr. Rodgi, there's only one simple answer. Yes. With effect from the 12th of April 2019, when we directed the collection of all details, everybody was put on notice that hereafter, the details which you furnished would be subject to the result of the petition. No problem in. Therefore, in drawing the balance, we did not ask for the disclosure of details prior to the interim order of the court. Absolutely. And that was a very conscious and well thought out decision of the Constitution bench. Was it the intention of the court to know which man paid where, so that if he pays A party, he will be subject to victimization of B? Answer is yes. Answer is. The answer is yes. Not that I can't tell you. My lord, only one line, my lord, only one line, my lord. Mr. Bhushan may, my lord, now hold his horse. Pursuant to your. He has done, my lord, substantial assistance. I don't have to formally disassociate myself with today's mentioning, my lord. That my disassociating from Mr. Agarwal doesn't mean that I am. Mr. Solicitor, irrespective of yes, but maybe treated as one. We must just tell you that we respect this very responsible approach which the Solicitor General has adopted of, because, clients apart, who you are representing apart. The It is institution has really to stand painful, above my lord, when the people before the court start, my lord, a media campaign to embarrass the judges. Thank you for saying that you It's don't very, my lord, associate painful. with the mentioning. Thank you for saying that you don't associate. Because with the- there is no level playing field. I can't hold a press conference. So, Solicitor, unfortunately. Only grievance is that it was not a justiciable issue. Yeah, Solicitor General did not raise it. It is not a matter of pure policy. I read the entire judgment. It was entirely a policy issue. It is not justiciable at all. That's all I want to say. The people of this country feel that a decision was taken behind their back. When the parliament decides, they were present in the parliament. It is with their consent. When your lordship decides, we are. Last order, the Election Commission has put out the sealed covers, but that's very interesting, that those sealed covers show that some of the smaller parties have disclosed the donors. We don't have to go into No, all but that, because- Mr. That's not our remit at all. No, I Yes, what has happened after the judgment is not something we are concerned Not with after at the all. judgment. What I'm saying, Now, no, what I'm saying is this, that since the order of the, very recently, I was asked about a critique on a judgment. I need not mention which judgment.
And I said that, look, it's no part of the role of a judge, least of all of a constitutional court or even a civil judge, to defend their views. Once we declare a judgment, it becomes public property. It's the property of the nation. If there is the property of the nation. And, No, I was only saying that your lordship's interim order of April 2019 asked the political parties to disclose the name of the donor. The information given by the political parties to the Election Commission, only a few of the political parties, the smaller regional political parties, some of them have disclosed. He is not the names of addressing the your donors. lordships, he is addressing somewhere else. Kindly hear him for some time. Correct. So that it comes, my lord, in the newspaper tomorrow, that Mr. Prashant Bhushan Amazing. vehemently said this. Amazing. That's the purpose. Solicitor, unfortunately, public interest litigation have now become publicity interest litigation. It is publicity interest litigation. I It am is, my lord, pointing there out are some hidden agendas. something. There is no doubt, my lord, and I am not, my lord, apologetic in saying. I am astonished. And my lord, that is the matter of greatest concern, because judgments given, my lord, for high constitutional principles then are used for purposes other than what they are delivered. Unfortunately, Lordships, in your lordship's majesty, So what would I'm not know, pointing my out- lord, what are the hidden agendas behind it. just dictate a short order. I I think, just we point are out that unnecessarily expanding upon the remit. Because the major political Just parties listen to the order. have not disclosed the donor. Just give us 2 minutes to dictate the order. Therefore, what all that I am requesting is that the disclosure of the details of the bonds should actually start from the beginning of the issue of the bonds, not just from the interim order, because this is leading to a situation. 1 second, we got the point. You filed an application on that. In our order. They have filed an Just, Mr. Ansari, just 1 moment. Do it in a very cool and calm atmosphere. It's a constitutional adjudication. Yes. Right? In our interim order, we said that the disclosure shall be made with effect from the date of the interim order. Yes. 12th of April 2019. Yes. Right or wrong, we have taken a conscious decision that the cutoff will be the date of our interim order. And we also explain why we took that date. We said after that date, of course, the Constitutional Bench has an option to go all the way back from the date of the bond or from the date of the judgment, some place via media, some via media in between. We took 12th of April 2019 because it was our considered view of all of us 5 that once that interim order was pronounced, everybody was on notice, what we told Mr. Rodgi. Now we have maintained that if you want that to go back to 2018, that's in the nature of a review of the judgment. the only reason why I'm saying that- modify that date. No, the only reason, because your lordship asked the political parties to give donor details to the Election Commission prior to that interim order. And while some of the political parties have given donor details, other political parties have not given donor details. The major political parties have not given donor details. And one political party, which is in power in one of the states, says, if somebody came and left it under our door, 10 crores of electoral bonds was left under our door, we don't know who it was. So therefore, I am saying that because this is leading to a situation, though your lordship asked the political parties to disclose donor details by that interim order, only some political Mr. parties. Bhushan, we have understood that argument, but what we are directing, once the numbers are given, it will sort out a lot of problems. A lot of your issues will But get for solved. that period of 2018 till Oh, that will. April we are not sitting in a 2019, review. We have taken a conscious decision. we are Please faced file with a review. situation where Mr. Bhushan, this will really be a substantive modification of the judgment. We can't do it like this in a miscellaneous application. no, And in the light of the disclosure which has come to light of the political parties, that's why I'm saying. And it was not a If the classical political decision, parties it was had conscious. disclosed the donor details, this would not be required. Draw the line somewhere, we had to hold the balance. We've held the balance ultimately. As your at lordship 212. pleases, but I just. Can I just add one sentence? Lordship said all the details, Lordship may consider, my lord. I have pointed out that 6 details may be necessary, my lord. One is the serial number, because they say 28,030 bonds have been issued. The second would be the date. 1 second. When you say serial number, you mean the alphanumeric, Total right? number of bonds issued are 28,030. I'm not saying just. The Lordship said all details, my lord. In my respectful submission, it will be. Mr. Sarve. No, my lord, Lordship, just permit me a minute. Sarve has fairly stated that he will, No, my lord. all the details, No, why? yes, yes, my lord. No, my lord, if I can just show. And dates are all already Consider what your disclosed. lordship would say, my lord. I'm just pointing out what details can be there. First is serial number.
Second is the date. The third would be alphanumerical number. Fourth column would be name of the donor. Fifth column would be the name of a political party, and sixth column would be the amount. Well, this will cover all the details, Lord, in my respectful submission. Malad, this is now asking us to sit down and collate one. This is a submission made to the court. Just like Mr. Salve made a submission to the court, I'm making. Yeah, we need. Very well, I'm making a submission to the court, Mr. Salve, asking us to do whatever. Look, Please permit my lord the Chief Justice to dictate the order now at least. Secondly, my lord, the Lordship said, Lordship has seen that IA, my lord, I filed that IA. For a preview order, if a Lordship have taken a conscious decision on that aspect of the matter, my lord, Lordship may say, my lord, because the order said, my lord, the voters are entitled to know as a right of information. If a Lordship have taken a conscious decision on that matter, my lord, it will be from 12th of April only, because we said, my lord, it should be, my lord. Otherwise, logically, once the right to know, my lord, is inbuilt in the system and in right to know of the voter, then, very well, I'll leave it at that. And there is a specific direction with effect from 12th April. Then your Lordship said, my lord, I have not pressed the application. So Bhujan, there will be no end to it. IA, what is the IA number, Mr. Ansariya? Just 1 second, Mr. Bhujan. IA number which you are not pressing is IA number? Diary number 12580-2024, which is MA number, MA diary number. So that you are not pressing. Yes, my lord. Just Just one, say MA by way diary of number information on 12580-2024. Mr. Vijay Hansaria, Learned Senior Counsel, appearing on behalf of the applicant, states after some submissions at the bar that the miscellaneous application is not pressed. In view of, my lord, whatever proceedings have gone to the court, in view of the proceedings before Whatever in view of whatever. Lord, if your lords, you can say that. Oh, Otherwise, what? In view of what? In view, we'll say, in view of the specific directions contained in paragraph 200, in paragraph 219, bracket B and C of the judgment of this court dated 15 February 2024. just one fact by way of information. Enough of assistance by this public spirited person, my lord. Your lordship doesn't need any further assistance. The details of the number of bonds shown by the, in the data. which He is has been gathering the submitted. details for a future PIL, my lord, so The that number of bonds- remains in, the he remains number of- relevant. Now please permit the my lord the Chief Justice to dictate the order. Heard everybody, Mr. I was just pointing out that there is a huge mismatch between the number of bonds purchased and the number of bonds encashed in the data submitted by the State Bank to the Election Commission. They are showing 18,871 bonds purchased, but showing 20,421 bonds redeemed. The total amount of bonds purchased is 12,155 crores, and the amount redeemed is 12,769 crores, that is 550 crores more than what were purchased. Now, the explanation for this could be because the data is from 12th April. At that time, the bond purchase was going on. On 12th April 2019, it was going on. What is possible is that some of these bonds were purchased prior to 12th April 2019, but redeemed after 12th April 2019, and that is why there is a mismatch. But I just wanted to point out there is a very large mismatch. There is no, my lord, these figures are not authentic. I've given the authentic 18,000 versus roughly 22,000. Sponsored NGOs are, my lord, fudging the figures and bringing their own. My lord, your lordships are aware, there is a beautiful, my lord, quotation by Einstein, that some people use statistics like a drunken man uses lamp posts more for support than for illumination. I'm just showing the number. I'm saying that 18,000. And this is what happens Okay, when we'll now it, leave it at that. I My will. lord, those numbers are not right, since, my lord, because all this is going to play out, the numbers are not right. The corrected numbers were not given in our application. वो अलग order pass कर देंगे. इसमें MA में ऐसा लिख लीजिए. In subpara B and C of paragraph 221 of the judgment of this court dated 15 February 2024, the direction to the SBI to submit details of bracket 1, the electoral bonds purchased, semicolon, and bracket T2, political parties which have received contributions through electoral bonds is specifically since the date of the interim order dated 12 April 2019. Stop. In other words, all details which have been directed to be furnished in the operative directions of this court
are with reference to the interim order, are on the basis, don't say on the basis of, are with effect from the date of the interim order, namely 12 April 2019. Full stop. The relief which has been sought in the MA for predating the point of disclosure would amount to a substantive modification of the judgment and hence cannot be dealt with in a miscellaneous application. Full stop. The miscellaneous application is therefore not maintainable and is accordingly dismissed. I want one more relief to prevent another round of contempt proceedings. Would your lordship just for a minute have my affidavit in compliance for? What is it that you want clarification? Yes. Marat, there was, when we gave your lordship, that's why I can see all this story has started. When we gave your lordship the original figure of 22,217 bonds, we had, by mistake, that was from 1st of April, not on 12th of April. If your lordship just sees para 4 and Marat, everything will be over because I know where this is going, where Mr. Bhushan is going. Please see para 4 of my compliance affidavit for 1 second. Yes. And please, I would invite your lordship to say, your lordships accept this. We have given the figures, Marat. There is no mismatch, there is nothing of the sort. The total, if your lordship sees that table. Not go into all that. I mean, I have to convince my lord I have complied with the order. I'm just saying. It's a compliance affidavit. It's a compliance affidavit of your chairman and managing director. We have accepted that. Please say your lordships have accepted our compliance affidavit. That will put an end to all this. By the judgment of this court dated 15 February 2024, this court directed, into inverted commas, this court directed, into inverted commas, the disclosure of information on contributions received by political parties under the electoral bond scheme to give logical and complete effect, to invert commas complete, to the ruling. Full stop. Thereafter, in paragraph 219, this court issued operative directions. These directions in subparagraph B and C are in two parts. Full stop. Subpara B requires SBI to submit details of the electoral bonds purchased since the interim order dated 12 April 2019, into inverted commas, till date to the ECI, into inverted commas complete. Such details, the court has indicated, into inverted commas, shall include the date of purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchased, into inverted commas complete. In the second part of the operative direction, in subpara C, SBI was required to submit, into inverted commas, the details of political parties which have received contributions through electoral bonds, into inverted commas complete, since the interim order dated 12 April 2019 till date to ECI. Full stop. SBI was required to disclose details of each, underline each electoral bond encashed by political parties, and to include inclusive of the date of encashment and the denomination of the electoral bond. Full stop. The above narration and a plain reading of paragraph 219 of the judgment dated 15 February 2024 indicates that SBI was required to submit all details, both in terms of the purchase and in terms of the receipt of contributions. Full stop. The expression, to invert commas, include in both subparagraphs B and C clearly demonstrate that the inclusive part was regarded as illustrative and not exhaustive of the nature of the disclosure which was to be made by SBI. Let's stop. In other words, we now, there's no manner of doubt that SBI is required to make a complete disclosure of all details in its possession
Full stop. This, we clarify, will include this we clarify, would comprehend the alphanumeric number of, and the serial number, if any, of the bonds which were purchased and redeemed. Full stop. Voting number 1 would be. The application, this was on your application, I think you had moved this, no? The application was by the applicant. Oh yeah, we had it. Therefore, Mr. Harishan Salve, Learned Senior Counsel, states that there is no reservation on the part of SBI in disclosing all details which are in its possession and custody. Full stop. In order to fully effectuate the order and to obviate any controversy in the future, we direct that the Chairman and Managing Director of SBI shall file an affidavit on or before 5 p.m. on Wednesday, date daldo. Could we have one more day on Thursday? Stating, yes, that's certainly 5 p.m. on Thursday, indicating that SBI has disclosed all details of the electoral bonds which were in its possession and custody, and that no details have been withheld from disclosure. Full stop. Even to the Election Commission. In terms of the directions contained in paragraph 221. Your Lordship may indicate the date when it will be uploaded by the Election Commission. The Election Commission shall upload the details forthwith on the communication by SBI. My Lord, I had directed, my Lord, the senior official of the bank to remain present. My Lord, the Deputy Managing Director and Chief General Manager are present here. The presence may be reported. Right. The court directed political parties to submit detailed particulars of donors against each bond, the amount of each bond, and the full particulars of the credit received against each bond, namely the particulars of the bank account to which the amount has been credited and the date on which such credit has been made. I'm only not saying this to explain how we understood the order. So this correlation between which political party has received money from whom comes in here, because the political party says, I have received so much money from so-and-so. Then it says, during the course of hearing, Mr. Sharma said that the ECI has only collected information on the contribution made in 2019 because of para 14 indicates direction was limited to contributions in that year. Your Lordship then clarify para 13 and 14 of the interim order are extracted below. In the above perspective, according to us, the just and proper interim direction would be to require all political parties who have received donations through electoral bonds to submit to the Election Commission and sealed cover particulars of the donors against each bond, the amount of each such bond, and the full particulars of the credit received against each bond, namely the particulars of the bank account to which the amount has been credited and the date of each such credit. The details will be furnished forthwith in respect of electoral bonds received by a political party till date. The details of such other bonds as may be received up to the date fixed for issuing such bonds, including February 19, May 19, will be submitted on or before May 19, and the seal cover will be accepted. Then your Lordships clarify, para 14 does not limit the operation of 13. 13 contains the direction in unequivocal terms to political parties to submit particulars of contributions received through electoral bonds to the ECI. Para 14 only prescribes the timeline for the submission on the contributions when the electoral bond should be done. In view of the interim order, the ECI must have collected particulars of contributions made to political parties through electoral bonds. In view of our discussion, the following directions are issued. The issuing bank shall stop issuance of bonds, which was done immediately. The SBI shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order by the court till date to the ECI, fully given, Madam. Details shall include the date of purchase of each bond, the name of the purchaser, and the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchase. All these details are given. SBI shall submit details of the political parties which have received contribution through bond since the interim order till the date of the ECI. SBI must disclose each electoral bond encashed by the political parties, which shall include the date of encashment and the denomination of the bond. Now, as we therefore understood this, the political parties have come and said, we have received so much from so-and-so. The details which we will give will make the database complete so that we have who purchased,
when he purchased and when they've gone. If the numbers are to be given, we'll give them, my lord. There's no problem. So according to us, the data... Mr. Salve, I have a few questions. First, tell us in what format is the data on the purchase and redemption of electoral bonds stored by the SBI? So, my lord, as I had explained in the application which we filed, because at that time we were functioning under the edict of anonymity, which had not been stayed. So at that time we were directed to preserve anonymity, including we had to take measures that within the bank. What is the format in which you maintain the data on purchase and redemption of electoral bonds? In what format do you store In two it? silos. Your lordship noticed that in the next order. So the data is maintained in two silos. You store it in 3 silos. From your application, it emerges now that you do it in 3 silos. The first silo is the bond number. The bond number is only on the bond. Purchase, and the third is the redemption. My lord, bond number is only on the bond, and it cannot be read except through under a UV light. That was only done, my lord, like authentication, because it was a bearer bond. That's what was sought to be. What's the purpose of the alpha? And second question, what is the purpose of the alphanumeric? The alphanumeric is the bond number which is visible only under a UV light. Is it only a security feature, or is it a security feature entirely? In the audit trail, do you also? No, my lord, audit trail is separate. That's why we do the entire KYC. In the KYC, we have a bond unique number. It's not the bond number. You have a marker number of a client. Third question. Yes. How does the redeeming branch? Yes. How does the redeeming branch? Yes. Match the electoral bond number to determine that it is not a forged bond? So they were not. That's what I'm saying. When they received it, the person encashing it gets it. He sees that it's a valid bond because you see the security feature. You don't keep a record of it. The physical inspection. While redeeming it, the only way you can ensure that it is not a forged bond. तो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में आप अभी सुन रहे थे, यहां सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आज फिर से सुनवाई हुई और सुनवाई में आज बहुत ही गर्मा गर्म सुनवाई, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बहुत नाराज दिखे। और नाराज किस पे? तो नाराज 2-3 अलग अलग मुद्दों पे, और उन मुद्दों को लेकर एक तो एसोचैम भी आया हुआ था, या फिक्की भी था, और दूसरी तरफ मुकुल रोहतगी एसोचैम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और दूसरी तरफ हरीश साल्वे जो एसबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इन लोगों के बीच और खासकर कुछ हॉट टॉक की भी नौबत आई थी। इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि आखिर यहां हुआ क्या है। जो अभी आप देख रहे थे उसमें जो कुछ हुआ है वो बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि कुछ भी ना छुपाएं, आप तमाम चीजें जो हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित तमाम जो संख्या है उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो सब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मुहैया कराइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह आदेश सुप्रीम कोर्ट से दिया गया था कि उसको जल्दी से जल्दी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे ताकि जनता को, वोटर्स को पूरी जानकारी मिल पाए। लेकिन यहां यह दिखाई दे रहा है कि एसबीआई कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब एक डिमांड और आ गई है कि 2019 से नहीं बल्कि 2018 और 19 के जो आंकड़े हैं वो भी पेश किए जाएं, और इसके अलावा 2019 से 2024 के बीच जो भी बॉन्ड खरीदे गए, जो भी बॉन्ड बेचे गए, इन तमाम जानकारियों को तो आप उपलब्ध कराइए ही, लेकिन उसमें भी कुछ गड़बड़ियां हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें कि इस बॉन्ड में जो बॉन्ड नंबर है वो आपने यानी एसबीआई ने आखिर अभी तक क्यों उपलब्ध नहीं कराए, क्यों पब्लिक नहीं किए, ये तमाम सवाल पूछे गए हैं। और भी बहुत कुछ हुआ वहां पर। यह पूछा गया जब सीजेआई ने कहा कि आप ये नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं, तो हरीश साल्वे जो एसबीआई की तरफ से थे उनका कहना था, आप जानते हैं हरीश साल्वे एक बड़े वकील, हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकील, एसबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका कहना था कि एक्चुअली ये यूवी नंबर के थ्रू होता है, अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू इसको देखा जाता है, इसलिए हम ये उपलब्ध नहीं करा सकते। तो इस पे सीजेआई ने कहा, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि भाई अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे ऑडिट करवा रहे होंगे, ऑडिट में आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ता होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस भी हुए हैं। क्रॉस क्वेश्चंस के मतलब ऑडिट ट्रेल जब आप कर रहे हैं तो वहां जो नंबर दे रहे होंगे वो नंबर दीजिए, बहुत कुछ। और इसमें नाराजगी साफ साफ दिखाई दी सीजेआई की, और सीजेआई ने यहां से
आज अपना फैसला सुना दिया है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में दो साथी मौजूद हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी भी हैं और समीरात्मज मिश्र साहब भी हैं, दोनों हैं, और थोड़ी देर में प्रशांत टंडन जी भी जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल इस ब्रेकिंग में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक का। एक बहुत ही अहम मसला, आप सोच रहे होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर है क्या, चुनावी चंदा आखिर है क्या। एक मिनट में आपको पहले बता दूं चुनावी चंदा क्या है। ये चुनाव से पहले या इस दौरान जब पार्टियों के लिए आर्थिक मदद करते हैं, पहले भी होता था, चंदे लेते थे लोग, लेकिन चंदे लेने का जो एक धंधा बना लिया गया, इस धंधे पे आपत्ति है। चंदा लीजिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन चंदा लेने के लिए जो धंधा है, यह धंधा ठीक नहीं है और इसी पर विपक्षी दल भी अब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, क्या कुछ कोर्ट रूम में हुआ। कोर्ट नंबर 1, आप जानते हैं कोर्ट रूम नंबर 1 जो है ये CJI DY चंद्रचूड़ का है और यहां 5 जजों की संवैधानिक पीठ जो इस मसले पर सुनवाई कर रही है, वो आज एक बार फिर से बैठी और पूरा क्या कुछ हुआ जरा सीधे चलते हैं, आपसे समझना चाहता हूं। कोर्ट रूम की बातें तो आप सुन रहे थे दोस्तों अभी से थोड़ी देर पहले, लेकिन उसको जरा विस्तार से बताइए अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, आज तो CJI जो थे वो दो बार जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आए और ख़ासतौर से एक तो उन्होंने SBI को बहुत कड़ी फटकार लगाई और ये तक SBI ने कहा कि आप कहना मतलब ये चाहते हैं कि आप जो मतलब सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगा तो आपके मन में जो होगा आप वो बताएंगे, एक तरीके से आप ये कहना चाहते हैं। तो इसको लेकर के सुप्रीम मतलब SBI भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आए CJI। सुबह ही जो थे हरीश साल्वे वहाँ पहुँच गए थे, तो हरीश साल्वे से जब बताया कि वो SBI की तरफ से उपस्थित हुए तो उन्होंने ये भी कहा साल्वे साहब से कि हम आशा करते हैं कि आप किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं आए हैं। यानी कि ये एक तरीके से संदेश जा रहा है कि SBI जो है वो किसी राजनीतिक दल के दबाव में जो है वो ये चीज़ छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक चीज़ जो थी समझ में एक तरीके से आई। दूसरा जो मज़ेदार बात राजीव जी ये हुई कि जो सॉलिसिटर जनरल है मुकुल रोहतगी, वो फिक्की और SOCM की तरफ से उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि साहब हमने जो इसमें एक मेंशन किया है, तो CJI ने कहा कि इस तरीके की हमको कोई एप्लीकेशन नहीं मिली और आपने इसको मेंशन नहीं किया है। तो उसने कहा कि नहीं मैंने इसको मेंशन कर दिया है। तो इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इसको हम बीच में नहीं सुन सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं इसको सुनिए। तो मतलब जस्टिस गवई ने जो था एक तरीके से फटकार लगाई कि सारी दुनिया जानती थी कि इसकी सुनवाई चल रही है और आप जो है आदेश होने के बाद आए। तो CJI ने कहा कि इसमें आपके लिए अलग से कोई अलग जो है मतलब मापदंड नहीं बना सकते। इसका मतलब वो जो थी उनकी बीच की याचिका जो थी वो बीच में ही एक तरीके से उनकी खारिज हो गई रोहतगी साहब की, फिक्की और SOCM की। जी दोस्तों, जो अभी बता रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, ये बात है फिक्की और SOCM, ये दोनों कॉर्पोरेट्स के अपने जो बनाए हुए एसोसिएशन है, संगठन है, और SOCM और फिक्की ये दोनों कॉर्पोरेट्स के संगठन, और इसकी तरफ से भी ये दिया गया एक याचिका दायर की गई कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो कंपनियों के जो नाम आ रहे हैं उससे कंपनियों के यानी कि जो व्यावसायिक घराने हैं या व्यापारी वर्ग है उसकी बदनामी होगी। तो इसको लेकर भी नाराजगी और इसके लिए रोहतगी जो हैं वो खड़े हुए थे, नाराजगी जताई सुप्रीम कोर्ट ने। यानी लगातार यहां नाराजगी और फटकार की बात सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में हम लोग सुनते रहे, देखते रहे। अब बहुत कुछ यहां हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात कि फैसला क्या कुछ दिया गया। बृहस्पतिवार को शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी देनी है। बृहस्पतिवार शाम यानी आज है सोमवार, पहले उन्होंने बुधवार लिखा, लेकिन फिर कहा गया, मांग हुई हरीश साल्वे की तरफ से कि थर्सडे, तो थर्सडे का दे दिया गया, यानी गुरुवार को या बृहस्पतिवार या थर्सडे जो कह लीजिए, उस दिन ये पूरी जानकारी देनी है। यानी नंबर भी बताना है, नंबर बताए बिना आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला। हलफनामा बृहस्पतिवार को देना है, SBI हलफनामा देगा। अमलेंदु उपाध्याय जी। जी SBI हलफनामा देगा और ये बताएगा उस हलफनामे में कि उसने सारी जानकारी दे दी। सारी की मतलब सारी, फिर स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि सारी का मतलब सारी, आपके पास जो भी जानकारी है, जो भी नंबर हैं आपके सारे। और जब उनसे साल्वे साहब से पूछा गया, CJI ने पूछा कि भाई ये बताइए ये नंबर जो है ये क्या है नंबर, तो उन्होंने कहा कि साहब ये नंबर जो सुरक्षा की दृष्टि से हैं और अल्ट्रा वायलेट रेस की जो है उसकी रोशनी में ही देखे जाते हैं। तो इस पर CJI ने पूछा कि ये सुरक्षा की दृष्टि से या ऑडिट की दृष्टि से, तो ये कहा हरीश साल्वे ने कि साहब ये जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से है, ऑडिट की प्रक्रिया अलग है।
यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से तो आपको ये बताना है वो ऑडिट की प्रक्रिया अलग है। इसका मतलब कि ये कुल मिलाकर के जो छिपाने की कोशिश की जा रही है तो ये उससे अलग है मामला। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये आपको देना होगा, ये केवल सुरक्षा की दृष्टि से है और इसमें छिपाने जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑडिट की चीज़ अलग है, ऑडिट में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये भी आप आ गया कि आपको ये नंबर देने और हर हाल में जो है वो देने होंगे। ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश और ये है कि आप इसको दीजिए और गुरुवार तक जो है वो चुनाव आयोग वो जो भी जानकारी मिलेगी उसको अपने उस पर अपलोड करेगा। ये जो चीज़ एकदम से सामने इसमें आ गई राजीव जी। दूसरा एक और मसला राजीव जी हुआ, वो ये हुआ कि जो एक आदिश अग्रवाल जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीजीआई को एक चिट्ठी लिखी थी। उस पर लेकर के उन्होंने साहब मतलब कड़ी नाराजगी जाहिर की सीजीआई ने, और उन्होंने कहा कि अग्रवाल साहब आप जो हैं उसके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और आप पूरी प्रक्रिया जानते हैं। यानी आप जो चिट्ठी लिख रहे हैं उस प्रक्रिया क्या मतलब है? आप ये जो चिट्ठी लिख रहे हैं, मैं केवल ये नहीं कहूँगा, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ये प्रसिद्धि पाने के लिए जी, है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरा और इसको और क्लेरिफाई कर देता हूँ। आदिश चंद्र अग्रवाला, आप जानते हैं दोस्तों, आदिश चंद्र अग्रवाला जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी सीधे बार एसोसिएशन के लेटर हेड पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भारत के राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये आग्रह किया था कि हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं नहीं, हम चाहते हैं, यानी एसोसिएशन चाहता है कि ये जो आदेश पारित हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, चुनावी चंदे को लेकर, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और फिर से सुनवाई हो इस पर। इसके अलावा जब ये इतनी चिट्ठी आई, हम लोगों ने अपनी एक ब्रेकिंग में भी और आप लोगों तक ये तमाम खबरें हमने पहुंचाई थी। आदिश चंद्र अग्रवाला यानी आदिश सी अग्रवाला जो हैं वो उन्होंने 2015 में नरेंद्र मोदी पर एक किताब भी लिखी है, यानी मोदी जी के वो भक्त हैं, ये साफ दिखाई देता है। और जजेज हों चाहे और भी हों, कौन किसकी भक्ति करता है यहां मायने वो नहीं रखता, लेकिन भक्ति जो है वो कम से कम कोर्ट की होनी चाहिए, कोर्ट के आदेश की होनी चाहिए, जो यहां नहीं दिखाई दे रही थी। तो इसके बाद उसी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से एक लेटर और वहां के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी चिट्ठी आती है और कहते हैं कि हम लोग इनकी चिट्ठी के से सहमत नहीं है, ये उनका पर्सनल लेटर है। बात यहां खत्म हो जाती है। लेकिन आज फिर से वो साहब जो हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं वो मुखातिब होते हैं सीजीआई से और वो इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं। तो उस बीच क्या कुछ होता है और वहां पर ये तमाम आप ब्रेकिंग देख रहे हैं, इसमें कोई ये ब्रेकिंग प्लेट्स आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। लेकिन यहां एक दूसरी चीज जो है, आदिश सी अग्रवाला, आदिश चंद्र अग्रवाला की जो बात मैं कह रहा हूं, यहां पर वो साफ साफ कह रहे हैं, सीजीआई कह रहे हैं कि श्री अग्रवाला एक व्यक्ति, एक वरिष्ठ वकील होने के अलावा आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, आप प्रक्रिया जानते हैं, आपने मुझे एक पत्र लिखा, ये प्रचार के लिए है, चलो इसे यहीं छोड़ दें, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि आप प्रचार के लिए, और यही बात सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हरीश साल्वे के लिए भी कही कि क्या आप किसी पार्टी विशेष के लिए, राजनीतिक दल के लिए उपस्थित हुए हैं या एसबीआई के लिए उपस्थित हुए हैं। जल्दी से आना चाहता हूं समीर जी आपके पास, जो कुछ चल रहा है उसमें ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये है आदिश अग्रवाला, आदिश सी अग्रवाला यानी आदिश चंद्र अग्रवाला। इनकी बात, इस पे हम कई बार बातें कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा, एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक आदेश दिया गया है, गुरुवार शाम 5 बजे तक अपने पूरे बॉन्ड के खुलासे का हलफनामा देना होगा। ये सब कुछ जो उसके और ये थोड़ा सा इसको सुधार लीजिए, जो आप ब्रेकिंग में चला रहे हैं, थोड़ा सुधार कर ब्रेकिंग में लेके आइए। चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी लेगा और कोई संदेह नहीं है, ये तमाम चीजें यहाँ चल रही हैं, और थोड़ा सुधार करके ले आइए स्क्रीन पे, क्या ला रहे हैं इसको भी जरा देख लीजिए, मैं अपनी टीम से कह रहा हूं। लेकिन यहाँ समीर जी जरा आपसे समझना चाहता हूं कि एक बहुत ही हॉट टॉक वाली स्थिति कोर्ट नंबर 1 में चल रही थी। आपने देखा कि सबसे पहले फिक्की और एसोचैम की तरफ से जो रोहतगी उपस्थित होते हैं वो हॉट टॉक करने की कोशिश किए। उधर हरीश साल्वे भी आज राजनेता के रूप में मौजूद नजर आ रहे थे। आदिश चंद्र अग्रवाला भी वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे की तरह या बीजेपी के नुमाइंदे की तरह बात कर रहे थे। ये सब कुछ चल रहा था। इस बीच हरीश साल्वे ये भी कह रहे थे कि मीडिया में, सोशल मीडिया
मीडिया में इसको लेकर जो बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि इस बातों पे भी रोक लगाने का आदेश दे दे सुप्रीम कोर्ट की, इस बारे में कोई खबर नहीं चलेगी। ऐसा, हालांकि उन्होंने ऐसी डिमांड नहीं की, लेकिन उनकी बातों से साफ झलक रहा था। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक माहौल बहुत ही गर्म नजर आ रहा था कोर्ट रूम में। और साथ साथ लेकिन एक बात यहां महत्वपूर्ण जो है समीर जी, वो ये है कि CJI DY चंद्रचूड़ ने साफ साफ वहां यह कहा कि जो हुआ है, जो 12 तारीख का आदेश हमारा है, 11 को बैठे थे, 12 के लिए जो आदेश था वो उस आदेश को फुलफिल कीजिए। अब इसके लिए बृहस्पतिवार को SBI हलफनामा दायर करके ये बताए कि हमने पूरे आदेश का पालन कर दिया है। समीर जी, दरअसल ये जो कोशिशें हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ये अग्रवाल साहब हों, उनका लेटर हो, ये सब एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इसको जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसको डाइल्यूट कर दे। सुप्रीम कोर्ट का दरअसल जो जजमेंट है, चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को ही उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता करके खारिज कर दिया है, और उस पर जो जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के एक हिसाब मांगा है, जो कि SBI को, चूंकि एक ही बैंक था जहां से ये जारी हो सकता था, उनको कहा कि आप दीजिए इसमें। अब पहले तो SBI ने जिस तरह से बचकाना तरीके से उसको वो लिंगर ऑन करने की कोशिश की और चुनाव के बाद तक टालने की कोशिश की कि हम 30 जून तक देंगे, तो बहुत कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये कौन सी ऐसी जानकारी है कि 2-4 हजार मुश्किल से ये स्टेटमेंट है, इनको देने में क्या ऐसी दिक्कत है। फिर आप देखिए कि एक दिन के भीतर उन्होंने सारी जानकारी दे दी। अच्छा, वो सारी जानकारी में भी क्या है, सारी जानकारी तो दी नहीं, अधूरी, आधी अधूरी जानकारी दी। तो सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच आपको एक इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर वो फैसला दे रही है, आपको कह रही कि आप जानकारी दीजिए, आप उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमतमाएंगे ही। और जजेस का जो एक पूरा का पूरा उनका जो तरीका है दिखाई पड़ रहा है कोर्ट रूम में, हम हर हियरिंग में हम लोग देख रहे हैं जी। तो स्वाभाविक है, वो ऐसा होना भी चाहिए कि आप उनके आदेश का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसको हम कैसे टालते चले जाएं। आज वाली भी स्थिति वही है। और जबकि जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट देने के लिए कह रहा है, जनहित में कह रहा है, उसमें आप उसको बार बार हीला हवाली कर रहे हैं। और ओरिजिनल जानकारी, चूंकि ये जानकारी तो पहले ही चुनाव आयोग से आ चुकी कि इतना चंदा दिया गया इस दौरान और सबसे ज्यादा किसको मिला। हाँ, थोड़ी सी फिल्टर होकर के और जानकारियां जरूर आई हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तो यही है ना कि किसने किसको दिया। जिन पॉलिटिकल पार्टीज को मिला भी है, कल से हम लोग देख रहे हैं कुछ रिपोर्ट्स में बातें आ रही हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही बता रही हैं कि हमको किस तरह से दिया गया। और इसमें जितने संदेह की जो गुंजाइश थी, जो लोगों को संदेह हो रहा था कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बहुत बड़ा खेल हुआ है, तमाशा हुआ है और क्या हुआ है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये सही बात है। अभी जो पिछले दिनों अमित शाह का एक इंटरव्यू हम लोगों ने सुना, उसमें उन्होंने तथ्यात्मक रूप से जो बताया वो तो वेरीफाई करेगा सुप्रीम कोर्ट और SBI को करना है। लेकिन ये सही बात है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला, खास तौर पर उन पॉलिटिकल पार्टीज को मिला जो रूलिंग पार्टीज थी। यानी इसमें बिल्कुल ये साफ है कि रूलिंग पार्टियों को आपने खूब ढेर सारा चंदा दिया और निश्चित तौर पर उसमें आपने उनसे अनाप शनाप फायदे लिए। और वो जो पार्टी सबसे बड़ी थी, केंद्र में थी, उससे जिन्होंने लिया उनको फायदा हुआ है। और यही जानकारी सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि वो पब्लिक डोमेन में आए और जल्दी से जल्दी आए, जिसको SBI बार बार छिपाने की कोशिश कर रही है। क्यों छिपाने की कोशिश कर रही है, किसकी वजह से छिपाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त लहजे में ये उनको रिप्रेजेंट करने वाले, SBI को रिप्रेजेंट करने वाले वकील से कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर अपने क्लाइंट को, SBI को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर फिर ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, सामान्य सी बात है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पूछेगा, बार बार उसके इतने महत्वपूर्ण आदेश की अवहेलना की जा रही है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो आदेश है, अभी थोड़ी देर में हम ब्रेकिंग के रूप में आप स्क्रीन तक भी लेके आएंगे, लेकिन जो आदेश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस आदेश में कहीं ना कहीं ये बात हो रही है, लगातार हो रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आखिर SBI कुछ चीजों को छुपा क्यों रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे आखिर अमलेंदु जी क्यों छुपा रहा है SBI, क्या कुछ हो सकता है, यहाँ पे क्या कारण है? देखिए राजीव, इसमें 2-3 कारण समझ में आते हैं। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद उन कॉर्पोरेट कंपनियों के नाम नहीं मालूम पड़ने पाए जिन्होंने चंदा दिया है, उनका धंधा क्या है।
और उनको सरकारों की तरफ से क्या क्या उनको लाभ मिले हैं, इस पे किसी तरीके से प्रकाश पड़ जाए, ये एक समझा जा सकता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी तो सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने इस तरह की कुछ बातें की, जैसे उन्होंने कहा कि आंकड़ों को किसी भी तरह से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, टेढ़े मेढ़े आंकड़ों के आधार पर किसी भी तरह की पोस्ट की जा सकती है, तो क्या आपके आधिपत्य एक निर्देश जारी करने पर विचार करेंगे, ये मतलब उन्होंने कहा, एसजी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा। तो कि जिस तरीके से निर्णय चल रहा है, अब ये लगता है कि कोई जादू टोना हो रहा है और जानबूझ के जो है मतलब मीडिया में जो है और सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखी जा रही हैं। तो इस पर सीजीआई ने कहा कि आप एक संस्था के रूप में जो है सोशल मीडिया कमेंट्री से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट सक्षम है, आप इसके बारे में हमको मत समझाइए एक तरीके से, मतलब ये कहा कि और हम कानून के शासन के द्वारा शासित हैं, तो इसलिए जो है ये इस पर ये रहेगा। दूसरा ये कि जो जब प्रशांत भूषण अपनी बात रख रहे थे उस पर उन्होंने कहा मुकुल रोहतगी ने कि साहब ये एक नई पीआईएल के लिए जो मसाला तैयार कर रहे हैं, ये भी कहा गया। तो उस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि आपने जानकारी नहीं दी, हम वही जानकारी इसमें मांग रहे हैं। तो ये भी हुआ, मतलब कि अब ये पीआईएल से जो डर लग रहा, तो जो कहा गया कि मतलब क्यों छुपाने की कोशिश की गई, तो ये समझा जा सकता है एक तो फिक्की और एसोचैम जिस तरीके से पहुंचे आज सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाकर के बीच में दखल करने के लिए, वो समझाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से हरीश साल्वे से कहा कि आप मतलब किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं है, तो ये समझाया जा सकता है मतलब क्या दबाव रहे होंगे और किनको बचाने की कोशिश की जा रही है, ये एक तरीके से साफ समझा जा सकता है एसबीआई करना क्यों चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राजीव जी बिल्कुल साफ साफ कहा कि हमने जो आदेश दिया था उसमें सारी चीजें स्पष्ट थी कि आपके पास जो भी जानकारी है, जो भी जानकारी का मतलब चाहे वो नंबर हो या कुछ भी, वो सब आपको देनी है, जो कि आपने नहीं दिए। तो ये कुल मिलाकर के मतलब ये है कि एसबीआई जो है वो कहीं ना कहीं किसी के दबाव में या किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था, ये बात समझी जा सकती है। और इस बात को एसबीआई ने कहा भी कि आप जिस तरीके से यहाँ बिहेव कर रहे हैं, तो आप अदालत को ये बताना चाहते हैं कि अदालत आपसे कहे कि आप क्या बताइए, आप उसको सिर्फ उतना ही बताएंगे, जबकि हमारा आदेश स्पष्ट है कि आपको सब बताना है। तो इसमें राजीव जी जो चंदे का धंधा एक तरीके से हुआ, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की जो है खासतौर से जिसको 66,000 करोड़ रुपया चंदा मिला बताया जाता है और 47% चंदा मिला है, उस दल के साथ किसी कॉर्पोरेट घरानों की ये मामला ना खुलने पाए कि किसने चंदा दिया और वो कौन लोग थे। जैसे आरोप लग रहे हैं कि भाई एक कंपनी जिसकी नेटवर्थ जो है 143 करोड़ है, वो 1300 करोड़ रुपया अगर वो चंदा दे रही है, तो आखिर कैसे दे रही है, मतलब आपकी इतनी हैसियत ही नहीं है, आपके पास संपत्ति नहीं है और आप उससे 10 गुना जो चंदा दे रहे हैं। तो ये सारे जो है घपले खुलने नहीं पाए और उसमें किन राजनीतिक दलों की संलिप्तता है ये दबी रहे, इसके लिए दबाने की कोशिश एसबीआई कर रहा था। राजीव बिल्कुल, एसबीआई बना यहां एक पीआईएल, उस पीआईएल को दायर किया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने, और उसके अलावा और भी कुछ जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन लोगों ने, और कांग्रेस पार्टी के भी एक दो नेताओं ने। और उसके बाद यह मामला देखिए दोस्तों, पिछले साल 2023 में नवंबर के महीने में इसकी सुनवाई पूरी होती है और 15 फरवरी 2024 को इस पर फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाता है उससे शायद एसबीआई ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल जो है वो भी चौंक गया, इसलिए क्योंकि यहां पर सत्तारूढ़ दल को सबसे ज्यादा बॉन्ड के जरिए यानी चुनावी चंदे जो है वो मिले, लगभग 7,000 करोड़ रुपए, लगभग 7,000 करोड़ रुपए। अभी तक 6,000 से ज्यादा की बात हो रही थी, लेकिन 7,000 करोड़ लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल एक और सूची आई है, एक और लिस्ट जिसको जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और उस लिस्ट में साफ साफ है कि 6,800 कुछ यानी 6,880 करोड़ रुपए, लगभग 7,000, और यह भी 2019 से लेकर 2024 के बीच के आंकड़े हैं। और इसको छुपाने के लिए अमित शाह जी इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में जो बातें कर रहे हैं वो साफ लगता है कि कैसे बचकानी हरकत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के तमाम देश के वरिष्ठ नेता जो हैं वो कर रहे हैं। और यही सारी जानकारियां जब लोगों के बीच छन छन के पहुंच रही हैं, तो फिर आज हरीश साल्वे से लेकर तमाम सत्ता पक्ष के जो वकील थे, एसबीआई के वकील थे, ये बात कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर रोक लगनी चाहिए। सोशल मीडिया इन बातों को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं, अपने कोर्ट नंबर 1 में कह रहे हैं कि इस मसले को पूरी दुनिया देख रही है। जी हां, इस मामले पर सबकी नजर है और उसके बाद आप चाहते हैं किसी चीज को छुपा दिया जाए। साफ साफ शुरुआत में उन्होंने कहा, हरीश साल्वे जो देश के सबसे बड़े वकील,
सबसे बड़े कहें ना कहें लेकिन सबसे महंगे वकील जरूर कह सकते हैं। हरीश साल्वे खड़े हैं एसबीआई की तरफ से। आपके हमारे सबके पैसे जो हैं हरीश साल्वे ले रहे हैं, ये तय मानिए, क्योंकि चंदा तो हो ना हो, लेकिन यहां पर आपके अकाउंट या कईयों के अकाउंट 50% लोगों के अकाउंट एसबीआई में ही होते हैं। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, लेकिन फैसले क्या हैं? अगर हमारी टीम ने तैयार कर लिया हो तो ब्रेकिंग के रूप में उस फैसले को लेकर आइए। सुप्रीम कोर्ट के ने जो आदेश दिया है उस आदेश में क्या बातें लिखी गई हैं, जरा उसको स्क्रीन पर लेके आइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एसबीआई बनाम एडीआर, और उसमें आज जो फैसला आया है उसी फैसले की कड़ी है। जो 15 फरवरी को फैसला आया, उसके बाद एसबीआई 6 मार्च को पहुंचता है और उसके बाद क्या कुछ होता है। लेकिन फैसले को पढ़ने से पता चलता है कि एसबीआई को खरीद के संदर्भ में और रसीद के संदर्भ में सभी विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उसके अलावा इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसबीआई को सभी विवरणों का खुलासा करना आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं है, एसबीआई को सभी विवरण देने थे। हम स्पष्ट करते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम स्पष्ट करते हैं कि इसमें भुनाए गए बॉन्ड की अल्फा न्यूमेरिक संख्या और क्रम संख्या यदि कोई हो शामिल होगी। ये कह रहे हैं कि अगर कुछ है तो इसको शामिल कीजिए उसमें। हरीश साल्वे का कहना है कि सभी विवरणों का खुलासा करने में एसबीआई की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। ये कह रहे हैं कि जब सभी विवरणों का खुलासा करने में कोई आपत्ति नहीं है तो फिर इसका आप खुलासा क्यों नहीं करते हैं, यह साफ साफ यहां कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है। और साथ में हम एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं। यह निर्देश भी यहां दिया जा रहा है कि, और जिसमें कहा गया है कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा किया है जो उसके और हिरासत में थे और कोई विवरण छिपाया नहीं गया है। जो उसके पास जो थे, जितनी भी चीजें थी कब्जे में है और हिरासत में थे, उसे कोई विवरण छिपाया नहीं गया है। जरा इसको, कब्जा अगर वर्ड है तो कब्जे को ठीक से लिख लीजिए। कब्जे में थे और हिरासत में तो उसे कोई छिपाया, यानी कि कहने का मतलब यह है कि एसबीआई ने यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को साफ साफ यहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार, और इस फटकार में साफ साफ यह कहा गया है कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत विवरण अपलोड करेगा। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे ही ये पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देता है, चुनाव आयोग तत्काल इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये तो चीजें चलती रहेंगी जो एसबीआई की तरफ से, आप जान रहे हैं कि फैसले में कुछ भी लिखा जाए, लेकिन सबसे यहां जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि आज की तारीख में भी, समीर जी, हम ये देख रहे हैं कि आज की तारीख में भी एसबीआई कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, ये साफ प्रतीत होता है। बिल्कुल साफ प्रतीत होता है, और सबसे अहम जानकारी ही छिपाने की कोशिश कर रहा है वो कि किस पार्टी ने किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। यही सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है। उसी से ये पता चलेगा कि इस जो पैसा उसने दिया, जो अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर 100-150 करोड़ का है, चंदा वो 500 करोड़ 600 करोड़ का दे रहे हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स कुछ चुनिंदा पार्टियों को दे रहे हैं, खासतौर से रूलिंग पार्टियों को। आपको यही पता होगा कि बीएसपी को कोई चंदा नहीं मिला है, लेफ्ट पार्टीज ने तो मना ही कर दिया था। और इस तरह से मतलब कहने का कि जो रूलिंग पार्टियां हैं, चूंकि रूलिंग पार्टियों से ही फायदा होना है, लेकिन अगर चुनावी चंदा दिया जाना है तो उसकी शर्तें तो दूसरी रखी गई हैं कि वो पार्टियां भी चंदा लेने के लिए हकदार हैं, पर उनको क्यों नहीं मिल रहा है। तो जो आप कह रहे हैं कि क्या छिपाना चाह रही, तो सबसे अहम जानकारी ही एसबीआई छिपाना चाह रही है। और सुप्रीम कोर्ट इतनी नाराजगी, इतनी सख्ती और इतनी कड़ी फटकार इसीलिए लगा रहा है कि आप जो हम जानना चाह रहे हैं उसको आप घुमा फिरा करके इधर उधर की आप तो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मुद्दे पर आप नहीं आ रहे हैं कि जो बात है, जो एकमात्र चीज हम चाह रहे हैं कि आप उसको बता दीजिए कि किस डेट में किस पार्टी को किसने चंदा दिया है, किस कॉरपोरेट ने, किस संगठन के जरिए, ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको छिपाने की कोशिश कर रही है, और छिपाने की कोशिश इसीलिए की जा रही है कि ये बात ना पता चल पाए, और ये भी पता है कि वो किसको बचाना चाह रहे हैं, किस खास पार्टी के चंदे को बचाना चाह रहे हैं, उसको नहीं ओपन करना चाह रहे हैं कि उनका फ़ायदा। कि एक चीज़ और भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो छोटी कंपनियां हैं और जिन्होंने बड़े चंदे दिए हैं,
उसके अलावा कुछ गुमनाम कंपनियां हैं जिन्हें शेल कंपनीज कहा जाता है। सबसे बड़ा खेल तो उन्हीं के जरिए हुआ है, जो बहुत सारे कुछ बड़े कॉरपोरेट्स के नाम डायरेक्टली उसमें नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली निर्दय करके फिर वो इनडायरेक्टली उन शेल कंपनीज के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके और पार्टियों को दिए हैं। तो ये जब उसका एक मिलान करके पूरा तारीख और डेट और पार्टी और कॉरपोरेट ये मिला करके दे दिया जाएगा, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और उसको सोच रहा है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको छिपा ले जाएं, कितना लिंगर ऑन कर सकें, कितना आगे बढ़ा सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इतना टाइम शायद देने के मूड में है, जिस तरह से उसकी हियरिंग्स के दौरान उनके जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और सवाल करने का जो हम लोग देख रहे हैं कि सख्ती जो दिखाई पड़ रही है, तो देना तो पड़ेगा ही। अब कितने दिन खींच ले जाते हैं एसबीआई और एसबीआई के वकील, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कितने दिन खींच ले जाते हैं, लेकिन यहां नहीं लगता कि अब खींच पाएंगे, क्योंकि हरीश साल्वे को जो फटकार लगी है, जो फटकार जो है वो मुकुल रोहतगी को लगी है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर, अपनी बातों पर अडिग है और फैसला बार बार वो वही बता रहा है, वही सुना रहा है और साफ साफ कह रहा है कि आप हमारे 15 फरवरी के फैसले को देखिए, आप हमारे उस डायरेक्टिव यानी जो हमने 11 मार्च को जो डायरेक्टिव दिए उसको देखिए, और वह उसी चीज को आगे हम बढ़ा रहे हैं और आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं। अभी तो इन्होंने हरीश साल्वे का नाम भी लिखा अपने फैसले में, और कहते हुए कि हरीश साल्वे बता रहे हैं कि एसबीआई को कोई भी जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं है। और ये यहां पर एक बहुत बड़ी बात है समीर जी, जो यहां चंद्रचूड़ कह रहे थे, जस्टिस चंद्रचूड़ साफ साफ जो बातें रख रहे हैं उसमें यह दिखाई दे रहा है कि देश को यह जानकारी होनी चाहिए, देश के मतदाताओं को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनके किस पार्टी को, किस कॉरपोरेट घराने ने या किस पब्लिक डोमेन से कहां से भी पैसा आया, चंदा आया, चुनावी चंदा, और कितने का आया, किसने दिया, यह सारी जानकारी होनी चाहिए। और यही लड़ाई यहां पे है और इसी चीज को छुपाने की कोशिश यहां एसबीआई कर रहा है। एसबीआई यानी कि सत्तारूढ़ दल की तरफ से, क्योंकि एक पब्लिक डोमेन में और सबसे बड़ा पीएसयू अगर वो ऐसा कर रहा है तो साफ समझ में आता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है, या जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। जो भी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इस महत्वपूर्ण फैसले को आगे बढ़ाते हुए जो डायरेक्टिव आज है वो ये है कि गुरुवार, बृहस्पतिवार को या थर्सडे कह लीजिए, उस दिन शाम 5 बजे तक एसबीआई हलफनामा दायर करेगा। गुरुवार है 21 तारीख, 21 मार्च। सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हलफनामा दायर करके कहेंगे कि हमने सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी हैं। यहां नंबर की बात, यूआईडी, यूनिक आईडी की बात हो रही थी अमलेंदु जी, और उस यूनिक आईडी में यहां पे साफ साफ जब कहा गया कि नहीं वो अल्ट्रा वायलेट रेज से ही उसको देखा जाता है, दिस इज जस्ट लाइक करेंसी नोट, कि उसमें कोई मतलब उसकी जो फेक ना हो, वो ओरिजिनल है, फेक नहीं है, ये रहना चाहिए। तो वहां बात ये भी आई कि 15 दिनों में उसको भुनाने की बात है। कुछ ना कुछ जानकारी तो होगी, कुछ ना कुछ। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट के क्रम में ये तो बताएंगे कि हाँ कितने कौन सी करेंसी किसको, यानी करेंसी नोट ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड को मानते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नंबर तो होगा, जैसे करेंसी नोट पे भी नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं से आप ये जानकारी उपलब्ध कराइए, और इसी पर हरीश साल्वे ने कहा कि हमारे पास वो जानकारी है। तो अब यहां बुरी तरह से फंसा हुआ दिखाई दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी तक बचाने की कोशिश कर रहा था, और अब बृहस्पतिवार और आज सोमवार है, मंगल और बुध 2 दिन है। उम्मीद है कि इन 2 दिनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस नंबर को भी दे देगा जिस नंबर के बाद यह पता चलेगा कि किस पार्टी को कितने पैसे मिले। एक बहुत ही मजेदार तथ्य आए हैं, आप लोगों के जानकारी में होगी शायद, जो कल अपलोड हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने जो अपलोड किया है उसमें एक अलग अलग पार्टियों के की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया था इलेक्शन कमीशन को, और जिसमें बताया गया था कि हमारे पास कहां से कितने पैसे आए, कहां से नहीं लेकिन कितने पैसे आए। तो उसमें कुछ लोगों ने यह भी लिखा कहां से आए, जैसे डीएमके को फ्यूचर वो जो गेमिंग है उसने पैसा दिया है 500 कुछ करोड़ रुपए। जेडीयू, जी हां, जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके दरवाजे पर एक आदमी आता है, करोड़ों रुपए देके और चला जाता है, नाम भी नहीं बताता है। क्या यह संभव है अमलेंदु जी?
बिल्कुल संभव नहीं है राजीव जी। और ये और वो भी 95, 83, 90% पैसा जो है वही है उनके चंदे का। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से सब खाल में इसके जरिए हुआ है। और एक और चीज़ आई है राजीव जी, कल जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसी में कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को 3,941 करोड़ रुपए मिला है। बिल्कुल। अब आप समझ सकते हैं कि ये मसला क्या है और एसबीआई बार बार क्यों जा रहा है, और केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है वो क्यों जाकर के बीच में मदाखलत कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जाकर के कि आपने फैसला दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर कुछ दूसरी तरफ से इसे लिया जा रहा है। गंभीर मामला एसबीआई की अर्जी के बाद सामने आया है। ये कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल कि गंभीर मामला जो एसबीआई ने अर्जी दाखिल की उसके बाद आया। आरिफ जी, आपको जब ये बात समझ में आ रही है कि अगर एसबीआई जाकर के अर्जी दाखिल नहीं करता तो गंभीर मामला सामने नहीं आता, तो एसबीआई को तुरंत सारे डाटा दे देना चाहिए था। इसका मतलब जो समझा जा सकता है कि उस डाटा में कुछ ना कुछ झोल है, और डाटा जो सामने आएगा वो किस तरीके से खतरनाक जो है वो एक साफ तौर पर कहा जाए कि सत्तारूढ़ दल है उसके लिए हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी इसको अलग से चलाया जा रहा है। किसी ने अगर किसी को पैसा दिया तो उसके बाद सब अपने अपने तरीके से उसे देखेंगे। तो इस पर जो है एसजी की दलील पे सीजीआई ने कहा कि आप अभी बहस ना करें, हमें आपकी इस समय असिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है। यानी कि मिस्टर केंद्र सरकार, मोदी सरकार, आप इस समय खामोश बैठिए, आपको इस मामले में अभी मदाखलत करने की, दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक तरीके से सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है। अब आप समझ सकते हैं राजीव जी कि एक तरफ कॉर्पोरेट घराने जा रहे हैं, एक तरफ केंद्र सरकार जा रही है और एसबीआई जा रहा है। तीनों जाकर के क्या कह रहे हैं कि साहब अभी आप इसमें थोड़ी नरमी बरत लीजिए, ये नंबर बताने को मत कहिए, क्योंकि नंबर अगर सामने आ जाएंगे किस नंबर से किस पार्टी को पहुंचा है, तो सारा खेल जो राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं, चंदे का धंधा जो है, वसूली रैकेट जो है, वो खुल जाएगा कि किस तरीके से वसूली रैकेट पिछले 10 सालों में देश के अंदर चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, क्या कुछ कहेंगे? अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे, एसबीआई बनाम एडीआर और इसकी इस पर लगातार गहमा गहमी का आलम है। देश में एक तरफ सत्तारूढ़ दल है जो इससे छुपने, बचने, बचाने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ कुछ अलग अलग ज्ञान परोसे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी 4 जजों की, और जो 4 जज उनके साथ हैं, यानी कुल 5 जजों की संवैधानिक पीठ लगातार परेशान किए हुए हैं हरीश साल्वे को, जो एसबीआई की तरफ से इस केस को लड़ रहे हैं, और इधर एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल हैं। मामला बहुत गंभीर हो चुका है और अब तो नंबर बताना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया। कागज दिखाने पड़ेंगे स्टेट बैंक को, लेकिन देखिए, मैं सुन रहा था पूरी कार्रवाई राजीव जी, और ये मामला कागज में तो एसबीआई वर्सेस एडीआर है, लेकिन जो दलीलें पेश हो रही थी उससे लग रहा था कि एसबीआई के आड़ में बीजेपी, कॉरपोरेट और सरकार है। क्योंकि जिस तरीके की दलीलें पेश हो रही थी वो यही थी। जैसे हरीश साल्वे को मैं सुन रहा था, हरीश साल्वे तो अपीयर हुए स्टेट बैंक से, लेकिन वो बार बार ये कह रहे थे कि साहब ये कॉरपोरेट जो है इसमें बड़ी मुसीबत फंस जाएगा। तमाम तरीके की बातें लिखी जा रही हैं सोशल मीडिया पे, तमाम तरीके के इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं मीडिया में, इसका क्या करें। तो ये पूरा परेशानी जो है वो यही थी कि इसको लेकर बीजेपी सरकार या बीजेपी घिर रही है, मोदी सरकार घिर रही है, और उन पे तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सारे दरवाजे बंद किए। उन्होंने अपने जो अभी ऑर्डर लिखवाया है, जिसको मैं सुन रहा था, उसमें अपने पिछले ऑर्डर को ही क्लैरिफाई किया है और कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अब सब कुछ देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग वो 2 नंबर, सीरियल नंबर या जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो अल्ट्रा वायलेट से दिखता है, जिसके बारे में हरीश साल्वे ने कहा कि वो ऑडिट से उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिक्योरिटी फीचर जैसे करेंसी नोट में होता है। तो वो नंबर भी देना पड़ेगा जिसके जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना ऑडिट करता है। राजीव जी, एक ट्रांजेक्शन हुआ है, हम लोग बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो एक तो बैंक अकाउंट नंबर, हमारा अकाउंट नंबर, एक वो अकाउंट नंबर है जहां हम पैसा भेजते हैं, एक तारीख है उसमें, और एक अमाउंट है। 5वीं चीज एक और होती है,
ट्रांजैक्शन नंबर, वो ट्रांजैक्शन नंबर बैंक के ऑडिट के लिए होता है। स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा नंबर भी आपको देना पड़ेगा कि जो आपके बैंक के ऑडिट में इस्तेमाल होता है। तो यानी अब कोई डाउट नहीं छोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने आखिर में ये भी लिखवा दिया कि जो कुछ भी स्टेट बैंक के पास इस मुद्दे पर है, जो कुछ भी, विदाउट हाइडिंग एनीथिंग, बिना कुछ छुपाए उनको सब कुछ इलेक्शन कमीशन को देना होगा। और केवल देना ही नहीं होगा, बृहस्पतिवार तक चेयरमैन और एमडी कोर्ट को हलफनामा देकर बताएं भी कि वो सब दे दिया है। तो अब ये जो तमाम तरीके की बातें आ रही कि एसोचैम कोर्ट जाएगा, फलाना कोर्ट जाएगा, इनको दिक्कत हो गई, उनको दिक्कत हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने आज वो सब दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि जी हमारा ऑर्डर जो है, अगर हम आप सबकी बात मान लेंगे तो वो ऑर्डर ही हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बहुत सोच समझ कर ऑर्डर को दिया है, तमाम सारे पहलुओं को ध्यान में रख कर दिया है। तो उस ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। सॉलिसिटर जनरल को उन्होंने सुनने से मना कर दिया। उनका जी थैंक यू वेरी मच, आपकी आवश्यकता नहीं है, आपके ज्ञान की हमको, आपके असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सब दरवाजे बंद कर दिया। अब राजीव जी क्या होगा कि जब ये नंबर आएंगे तो अब एग्जैक्ट लिंकेजेस होगा। अभी तक तो तारीख से लिंकेज करके लोगों ने बताया कि ये तारीख को इसने, ये लॉटरी वाले ने खरीदा, इसने फलाने ने खरीदा, इसके यहाँ रेट पड़ी थी। तो अभी क्या है कि केवल जिसको कहते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि ये रेट इतनी तारीख को पड़ी थी तो उन्होंने बॉन्ड खरीदा। अब तो एग्जैक्ट नंबर आएगा और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम आएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एकदम साफ कर दिया है, और इलेक्शन की जो पूरा नैरेटिव है अब इसी पे होगा। एक बात, दूसरी बात कि देखिए मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब सरकार की तरफ से बहुत झूठ बोले जा रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, बढ़ाइए। एक जानकारी आ रही है, आवाज मेरी आवाज जरा बढ़ाइए जी। एक ये भी था मामला कि अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि आप यहां 2019 से 2024 तक के आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन 2018 और 19 के भी आंकड़े दीजिए, जिसमें 4000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए थे। 4000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपीज इन ईयर। तो उसमें ड्यूरिंग द ईयर, अब यहां है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इसका भी खुलासा करना होगा एसबीआई को, यानी 2019 से ही नहीं बल्कि 2018 से 19 तक के 4000 करोड़ रुपए किसको दिए गए इसको भी बताना होगा। और जो अभी बता रहे थे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी कि 3000 करोड़ से ज्यादा तो 2019 के चुनाव के समय ही यहां मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। तो ये पैसे कहां से आए? इसमें कुछ और कंपनियां हैं, उन कंपनियों के, हालांकि अडानी को भी आज चोट लगी है सुप्रीम कोर्ट में। अडानी का एक केस पहुंचा हुआ था, अडानी ने वो भी आप लोगों को बता दे रहा हूं, अडानी का नाम अचानक क्यों ले रहा हूं वो भी बताऊंगा। अडानी ने सुप्रीम कोर्ट में अडानी पावर की तरफ से जयपुर विद्युत निगम जो है उसको 1376 करोड़ रुपए की मांग करने की याचिका की गई थी कि इतना बकाया पैसा है हमारा जयपुर विद्युत निगम का के ऊपर, अडानी विद्युत निगम, अडानी पावर को इतना पैसा चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और साथ साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है अडानी के ऊपर। ये दो जानकारी थी जो आप तक पहुंचाना चाह रहा था। प्रशांत टंडन जी, जरा आप मुस्कुरा रहे हैं, जरा बताइए बात क्या है। नहीं, इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं, ये जो 50,000 रुपए का जुर्माना हुआ है जयपुर विद्युत वितरण निगम के मामले में, ये जयपुर विद्युत वितरण निगम का मामला वही है राजीव जी जो राजस्थान सरकार की सब्सिडी अडानी पावर के ऊपर पैसा बकाया था। अडानी पावर पैसा दे नहीं रहा, 1300 रुपए जो आपने चर्चा की है। दुष्यंत दवे अपीयर हो रहे थे उस केस में,
और ये केस अचानक लिस्टिंग से गायब हो गया था। जजेस ने ये मामला उठाया था, याद होगा आपको। और जजेस ने जब ये मामला उठाया कि ये लिस्टिंग में कहा, तो रजिस्ट्री को उन्होंने सम्मन किया। रजिस्ट्री के अधिकारियों को अपने चेंबर में बुलाया जजेस ने, और कहा ये गायब कैसे हो गया मामला, रजिस्टर्ड था जो कल तक। तो ये कहा गया किसी के आदेश से हुआ। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के मामले को, सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल फंक्शनिंग को प्रभावित करने की भी कोशिश हुई थी। ये वही मामला है जिसपे आज 50,000 रुपए का फाइन जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। बकाया तो देना ही होगा, क्योंकि वो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कर चुका है। दूसरी बात जो बात मैं कह रहा था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, देखिए अब चुनाव का नैरेटिव इसी पर तय होगा। अब मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो तमाम, एक तो कि जो बहुत अच्छा काम मीडिया ने किया है, इनको मतलब हजार सलाम पत्रकारों को, जिन्होंने दिन रात एक करके जो भारत की एजेंसियां नहीं कर पाई, जांच एजेंसियां, वो काम बहुत थोड़े संसाधनों में, बड़ी थोड़ी सूचना के आधार पे मेहनत करके ये पत्रकारों ने निकाल के सामने रख दिया कि किस कंपनी ने कब बॉन्ड खरीदे, कब इसकी ईडी की रेट पड़ी थी, कब ठेका मिला। ये सिंपल काम जो है सीबीआई ईडी को करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। जो मीडिया ने 2 दिन में 24 घंटे के अंदर इसको कर दिया। अब क्या है कि झूठ का काम चालू हो गया कि अमित शाह एक मीडिया की दुकान पे गए, गोदी मीडिया की, और वहां वो कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ का चंदा आया, जिसमें बीजेपी को केवल 6,000 करोड़ रुपए मिला। अब इस तरीके की जो फेक न्यूज है, देखिए अभी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अभी चुनाव आयोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और बिल्कुल जो है वो बशीर बद्र के टक्कर की शायरी भी कर रहे थे। तो ये जो मुशायरा कर रहे थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त, अब उनकी जिम्मेदारी है कि अगर मीडिया में गृह मंत्री की तरफ से ये झूठ बोला जा रहा है, उसको वो चेक करें, क्योंकि वही दावा कर रहे थे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई करें। मुशायरे तो हम लोग बहुत सुनते हैं, हमको इलेक्शन कमीशन से मुशायरा नहीं सुनना है, उनसे काम चाहिए। तो अब ये जिम्मेदारी उनकी है, राजीव जी। निष्पक्ष चुनाव चाहिए। जरा दिखाना चाहता हूं कोर्ट रूम में जो चल रहा था, उसमें जो नाराजगी जताई डीवाई चंद्रचूड़ ने, जरा उसको देखिए। और एक छोटी सी 1-आध मिनट की बाइट है, उसको देख लेते हैं। कोर्ट रूम में आज जो मसला हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, जो साथी हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, उनको बता दूं कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी सवालों के घेरे में है। लगातार चुनावी चंदे को लेकर उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और जब फटकार लगती है सुप्रीम कोर्ट से, तब एसबीआई थोड़ी सी जानकारी दे देता है, फिर वो बैठ जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। और ये क्रम 15 फरवरी से लेकर आज, जबकि तारीख है 18 मार्च, ये पिछले लगभग महीने भर से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और लगातार चल रहा है। इस क्रम में ही आज फिर से फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और वहां बताया गया है, आदेश हुआ है कि आप किसी भी हाल में गुरुवार तक एक हलफनामा दायर करके ये बताइए कि आपने जो नंबर है, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदे वाली जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के जो नंबर हैं वो भी आपने उपलब्ध करा दिए। और जैसे ही ये उपलब्ध होता है, ये नंबर दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तत्काल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। लेकिन कोर्ट रूम में और क्या कुछ हुआ, जरा सुन लेते हैं। On board before us. No, I have got it with. I've made my. The entire judgment has. Second, you wait. One at a time. Sorry, Mr. Rabdi. Yes. No, my submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute recidicator. This judgment doesn't constitute recidicator. One second. Yes.
1 second. This 1 gentleman is second. poet. Please listen to me. Your Honor, 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rodgi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, There's no question you've got. My friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No further. We will go by what your lordship. All, please. Whatever your lordship says, we will go by that. Do you want another contempt notice? No, my lord, your lordship will go by You have whatever had your enough lordship to says. Bombay. Only I have said what I wanted to say. That this judgment is rendered behind the back of the people of this country. It doesn't bind us. It doesn't constitute us. It is not a representative. Do not, please, once we have said no, please move the application. तो सुन रहे थे आप यहां सीधा सीधा डू यू वांट कंटेम्प्ट नोटिस, ये साफ पूछ रहे हैं सीजेआई कि आप क्या चाहते हैं, अवमानना का नोटिस हम दें आपको। और यहां जो बहस चल रही है उस बहस को आप देख रहे थे। मसला जो है वो कहीं ना कहीं फिक्की और एसोचैम और उन व्यापारी वर्ग की तरफ से भी मामला यहां लेके आया गया था, जिसके लिए पहले से नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन आके खड़े हो गए। ये तमाम बातें चल रही थी। मामला जो है वो एसबीआई का है और सीजेआई साफ साफ यहां कह रहे हैं कि भाई साहब आप जानकारी दे दीजिए, हम बार बार आपको कह रहे हैं। आप अगर जानकारी नहीं देंगे, पूरी जानकारी जिसमें नंबर भी उपलब्ध होना चाहिए, किस पार्टी ने कब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी ने उसे भुनाया। एक पार्टी जो व्यापारी है और दूसरी पार्टी जो है वो राजनीतिक दल है। और यही बात यहां कहते हुए और उसी में एक फैसला सुनाते हुए नजर आए चीफ। अब जरा फैसला क्या कुछ सुनाया गया है, आइए आखिरी बिल्कुल क्या कुछ फैसला सुनाया गया है वो भी देख लेते हैं। Details of the electoral bonds purchased since the interim order dated 12th April 2019 into inverted commas till date to the ECI into inverted commas complete. Such details, the court has indicated into inverted commas shall include the date of purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchased into inverted commas complete. In the second part of the operative direction in subpara C, SBI was required to submit into inverted commas the details of political parties which have received contributions through electoral bonds into inverted commas complete since the interim order dated 12 April 2019 till date to ECI. SBI was required to disclose details of each into inverted